Good afternoon. You're watching CNN News 18. I'm Arunima. We are counting down to that exclusive interview with Prime Minister Narendra Modi on Network 18. The first glimpse is available from 6 p.m. onward this evening. Our top story this hour, setback for Congress in the national capital. The state president of Congress, Arvinder Singh Lavli, has resigned from his post just ahead of polling in Delhi. Now, citing dissatisfaction with the Congress-Aam Aadmi Party alliance in New Delhi, Arvinder Singh Lavli submitted his resignation letter to Congress President Mallikarjun Kharge. He expressed frustration over interference from party General Secretary in charge Deepak Babaria and alleged pressure to expel leaders who oppose Babaria's leadership. BJP took a dig at the Congress-AAP alliance after the resignation. Aam Aadmi Party called it an internal matter for the Congress. अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? नहीं, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। हमारी पार्टी कुछ नहीं कहेगी, ये सही वक्त नहीं है। थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। इस पर हम कांग्रेस अध्यक्ष जी से बात करेंगे और दिल्ली के अन्य नेताओं से बात करेंगे। अभी कहना कोई उचित नहीं। फिर से एक बार टुकड़े टुकड़े कांग्रेस का प्रमाण मिला है। कैसे कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमांड के रवैये से अपमानित होकर अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। बताइए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, उसे कांग्रेस हाईकमांड ने माफ कर दिया, गठबंधन दिल्ली में कर दिया, दोस्ती दिल्ली में कर दी, उन्हीं लोगों के साथ जिनको शराब घोटालेबाज कहते थे। बात हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी, उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। Sir, the letter is quite extensive. He has mentioned all the reasons why he has resigned, starting from how he was miffed with AICC Delhi in charge, Mr. Babaria. What chat did you had with him, sir? I just inquired about his resignation. He has said he has some personal problems, so that's why he has written a letter to the Congress president. I have not gone through the content of the letter. So let me go through the content of the letter, then I will be able to tell you why he has resigned. But he has said he has resigned from the post, not from the Congress party. Okay, so one more thing, sir, because the reasons which are mentioned, one of the major reasons is that the alliance with the Aam Aadmi Party, and you are part of that very coordination committee. Earlier, you had any idea that there was something wrong between these equations? There is no problem as far as alliance in Delhi is concerned. Alliance is there and it will remain there. It is India Alliance, where all of us are together and we'll see that all the 7 candidates are victorious. Any word from the High Command, sir? Not yet. Let me talk to them and I will be back with you. My colleague Yash Goyal is with me on the broadcast right now. Yash, all of this is going on amid speculation that will Arvinder Singh Lavli step down only from his position in Congress or also from the primary membership of the party? See, Arunima, Mr. Chopra and Mr. Dikshit both have maintained that he has just resigned from his post of the president of the DPCC, not from the party. In fact, what we are also learning via sources is that yet there is no decision which has been made by Mr. Lavli of stepping down from the party or actually quitting the party. In fact, hectic parleys are also on, as we are understanding. Ex-MLAs from the Congress party are coming here, paying him visit. In fact, certain senior leaders also came, like the likes of Mr. Dikshit and Mr. Chopra. But as of now, one thing which
remains to be seen exactly, are these the only reasons because he actually stepped down from the post, or something else was also going on. Now, why I say that? Because a lot of supporters are actually pouring in here at Mr. Lovely's residence, but there are also certain ex-MLAs like Mr. Asif Mohammed Khan, who actually just came and had altercation with the supporters of Mr. Lovely. In fact, he said that this entire thing has been orchestrated by the Bharatiya Janata Party and Mr. Chopra. In fact, he was receiving calls from them to join this very campaign, in fact join this very thing which happened today of Mr. Lovely's resignation. But he said that he denied that thing. This is just an allegation coming in from a leader of the Congress party. But yet right now what we can say, one thing is not well, which is nothing is actually well within the Congress party as of now, because they are also raising questions against AICC's Delhi in charge. Is it also about the way candidates were selected for Lok Sabha election? Two names doing the round, that Mr. Lovely was unhappy with the ticket that was given to Udit Raj and Kanhaiya Kumar? Well, absolutely. It is quite clear in that very letter which has been written to Mallikarjun Kharge as well. In fact, this was the second point where he mentioned these things, that the tickets which were given from Northwest Delhi and Northeast Delhi, he was not happy with that, because he says that someone from outside was actually brought in to contest from these seats. In fact, this is the allegation which has been within the leaders of the Congress party here in Delhi since they were actually, Udit Raj and Kanhaiya Kumar were introduced. And in fact, that very joint press conference was addressed by them. In fact, that time also there were protests outside DPCC regarding this very thing. And today we seeing that Mr. Lovely stepping down. In fact, some days back, Rajkumar Chauhan, who was also another minister, ex-minister, had also stepped down from the Congress party. Right, Yash, thank you so much. Keep an eye. That story is developing. We'll have to wait and see what happens next as far as Mr. Arvinder Singh Lovely is concerned. But one of the issues he flagged off for his resignation was alliance with the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party, however, refused to comment on this, saying it's their internal matter. Let's listen in to all the reactions that we have. कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और उनकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है. मुझे लगता है कि वो ही उसके बारे में बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है. कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है. कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो ज़मीनी नेता वो तंग हैं. और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग हैं. और ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे. कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है? सर, पहले आपने रेजिग्नेशन दिया, अब लवली जी ने रेजिग्नेशन दिया. ऐसा क्या हो गया कि चुनाव अभी चल रहा है, दिल्ली ने वोट भी नहीं करा है? अगर आप पार्टी के बारे में सोचते हैं तो अभी क्यों आपने रेजिग्नेशन देने का सोचा? मैंने जो रिजाइन दिया था, एक दीपक बाबरिया जी ने मीटिंग कॉल की, उनके फ्लैट के अंदर हम लोग बैठे हैं टेबल पे. मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, कहते हैं आप अभी नहीं बोलेंगे. अरे भैया, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किस लिए बुलाया आपने? आपने बुलाया अपनी बात कहने को और हमारी बात सुनने को. कहते हैं आप बाहर जाएं. फिर बोलता हूं तो कहते गेट आउट. 4 या 5 बार इस व्यक्ति ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा. फिर मैंने सख्ती से उनको अपनी बात को रखा और रखने के बाद मैंने उनको बोला उल्टा सीधा, यार हम लोग 50 साल से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ. क्या उसी दिन के बाद से आपको हटाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था लवली जी? उसी के बाद से ही लवली जी को प्रेशर दिया जा रहा. जब मैंने पेशकश कर दी कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, उसके ऊपर प्रेशर लवली जी के ऊपर बनाया जा रहा. मुझे हटाएं, उसको सुरिंदर को हटाएं.